नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorable Chief Guests, respected teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today we all are together here to celebrate independence. Independence is the blessings of Almighty Allah. It is the name of breathing in the free air and moving anywhere and anytime with one's own with no restrictions whatsoever. It is the name of justice, freedom, equality, peace and sincerity of mind. And that independence, thankfully, we are having today in this pure land of Pakistan. खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े और हमने वतन मांग लिया. Every blessing had a good price behind it. So is with the independence we are enjoying today here in Pakistan is come a lot of sacrifices, struggles and many other countless things. It is an open secret that before independence we first lived under British in United India. Our very rights and obligations come under an unprecedented attacks. मेरे वतन के उदास लोगों न खुद को इतना हकीर समझो, मेरे वतन के उदास लोगों न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ही अपना हमें थमा दो. उठो और उठकर बता दो इनको, उठो और उठकर बता दो इनको, हम हैं ले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा. Blessed be those leaders whose efforts, whose hard works gave us the country like Pakistan. The efforts of Allama Muhammad Iqbal, the hard work of Quaid-e-Azam and many other countless independent stars went through successfully. And what we got today are free and fresh air to breathe and live to as per as our rules, our regulations, our cultures and our own values. खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब. हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है. History is a good lesson. It indeed reminds us to our true value of prestige and power. The history of Muslim struggles under United India bears a glaring testimony to the fact of Muslim and intense aspiration for a true and free state for the Muslims. That history of sacrifice and struggles remind us how much our country Pakistan is valued. It reminds us our true aim and purpose behind the creation of Pakistan. As an independent state, 14th August Day comes to remind us our unmet and ignored commitment and responsibilities. Being a representative on this land, we are having a huge responsibility on our heads. We are responsible for prosperity, we are responsible for progress, we are responsible for development, and we are responsible for the peace of our nation. आने न देंगे अपने गुलशन में हम खज़ां को, आने न देंगे अपने गुलशन में हम खज़ां को, जब तक बनाएंगे इस गुल पाक फ़ज़ा को. रंग देंगे अपने खून से रास्ते वतन के, रंग देंगे अपने खून से रास्ते वतन के, जलवे हमारे दिल में इसकी किरण किरण के, जलवे हमारे दिल में इसकी किरण किरण के. We have stick to the point of unity, integrity, faith and discipline. As said by our great guide, Pakistan is meant to stay forever here. None can undo it. Therefore, being a responsible future of my country, the commitment of stay loyal, the commitment of stay truthful, I would serve my country with dignity and honor and serve of pride. In last, I want to say, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के अपनी में कभी झुक नहीं सकता. मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है लेकिन, मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है लेकिन तारीख और आग से मैं कभी मिट नहीं सकता. थैंक यू. अस्सलाम. पाकिस्तान जिंदाबाद.